Hello students, how are you all? I hope you are good and happy. So today we are going to begin with the lesson number 1, that is knowing about computer. In this chapter we are going to study about the input devices, output devices, processing devices, storage devices and external storage devices of our computer. So here, computer is an electronic machine, as I told you in the last classes also. What is a computer? We know computer is an electronic machine that is able to take data and process it to make new information. जो क्या करता है, data लेता है, process करता है, एक new information बनाता है. Computer works on a IPO cycle, that is input, processing and then output. So there are 4 main processing steps. 4 main processing steps होते हैं आपके कंप्यूटर में. That is first input, processing, output and storage also. So a keyboard usually has 104 keys. So let's talk about the input devices. So the device through which you enter data and instructions in a computer are called input devices. The devices through which you enter data and instructions in your computer, those devices are known as input devices. So how many keys does a computer have? A computer have 104 keys. So keyboard is most frequently used input device. Keyboard क्या है आपका सबसे ज़्यादा frequently used input device है जिससे आप input देते हो अपने कंप्यूटर में. It contains a grid of buttons. वो grid of buttons होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? We call those buttons as keys. Now let's talk about mouse. This is a pointing device. A mouse is a pointing device that allows us to enter data into a computer by pointing. जिसके थ्रू हम क्या कर पाते हैं? अपने डेटा को एंटर कर पाते हैं अपने कंप्यूटर में पॉइंटिंग के थ्रू. सो ड्रैग करके एंड ड्रॉप करके भी. अ माउस हैज 2 और 3 बटन्स. आपके माउस में 2 बटन्स भी होते हैं और 3 बटन्स भी होते हैं. So this is a 3-button mouse which also has a scroll wheel also. This is a 2-button mouse which does not have a scroll wheel on its top. Now here Douglas Engelbart invented the mouse in 1963. किसने करा था? Douglas Engelbart ने करा था invent mouse 1963 में. Now let's talk about light pen. A light pen is also a pointing device. ये भी एक pointing device होता है जो किस लिए यूज होता है? ड्रॉ करने के लिए objects directly on computer screen. With the help of this, you can draw the things directly on the computer screen. It is used to draw pictures on the screen. ये किस लिए यूज होता है? Pictures draw करने के लिए आपकी स्क्रीन पे. Now light pen is used by commentators of cricket. कौन यूज करते हैं? कमेंटेटर्स होते हैं ना आपके क्रिकेट मैच के, वो लोग यूज करते हैं मार्क करने के लिए स्क्रीन को what they want to show. Now let's talk about barcode reader. So this is a handheld barcode reader. A barcode reader is an input device. ये भी एक input device है जो किससे यूज होता है? स्कैन करने के लिए एंड डिकोड करने के लिए. barcodes have mostly you have seen in the malls or in the shops to read the barcode. It contains a light source. उसमें एक light source होती है, lens होता है and light sensor होता है. Now let's talk about microphone. A microphone is an input device. ये आपका input device होता है जो क्या provide करता है? Input provide करता है आपके कंप्यूटर को किस फॉर्म में? साउंड और वॉइस की फॉर्म में. ये जनरली क्या होता है? किस लिए यूज होता है? रिकॉर्ड करने के लिए साउंड्स को. नाउ लेट्स टॉक अबाउट स्कैनर. अ स्कैनर इज अ इनपुट डिवाइस. एक स्कैनर भी आपका इनपुट डिवाइस होगा जो हेल्प करता है इनपुट करने में प्रिंटेड पिक्चर्स को, टेक्स्ट को एंड इलस्ट्रेशंस को आपके कंप्यूटर में. It reads the images and translates the information and send it to the computer. It read करता है आपके images को, translate करता है और send करता है आपके कंप्यूटर को. Now let's talk about webcam. So a webcam is a camera. ये कैमरा होता है that inputs images. जो क्या करता है? इनपुट करता है images को into a computer by directly capturing them. ये directly capture करता है उनको. It is used for web chats. ये किस लिए यूज होता है? web chats के लिए यूज होता है जो आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हो. As it helps you to see the person you are chatting with. Now let's talk about joystick. A joystick is an input device. ये आपका input device होता है जो किस लिए यूज होता है? प्ले करने में गेम्स को आपके कंप्यूटर में. It has a handle with the firing button on top. इसका हैंडल होता है जिसमें क्या होता है? फायरिंग बटन होता है उसके टॉप पे. Now let's talk about OCR. OCR is optical character recognition. So OCR stands for optical character recognition.
It is used to read printed text. ये किस लिए यूज होता है? प्रिंटेड टेक्स्ट को रीड करने के लिए, इमेजेस को एंड कन्वर्ट करने के लिए उसको मशीन रीडेबल टेक्स्ट फॉर्मेट में. Now let's talk about OMR, means optical mark recognitions. This stands for optical mark recognition. It is also known as optical mark reader. So it is used for reading the data. किस लिए यूज होता है? आपके डेटा को रीड करने के लिए by identifying certain markings. Identify करता है कि certain markings हो गए आपके डॉक्यूमेंट पे, like surveys or text. Now let's talk about MICR. This means magnetic ink character recognition. It stands for magnetic ink character recognition. It is used to read special characters printed in magnetic ink. ये किस लिए यूज होता है? स्पेशल कैरेक्टर्स को रीड करता है जो किस में प्रिंट होते हैं? आपके मैग्नेटिक इंक में प्रिंट होते हैं. सो लाइक द नंबर्स जो होते हैं आपके, कैरेक्टर्स जो फाउंड होते हैं आपके बॉटम ऑफ द. नाउ लेट्स टॉक अबाउट आउटपुट डिवाइसेस. The device through which you can see the output, through which the devices see the output from computer are called output devices. जिससे जो आपके रिजल्ट को शो करते हैं, like monitor, printer, these are known as the output devices. Monitor is the most commonly used output device. सबसे ज़्यादा commonly use होने वाला output devices है. It is also called visual display unit. We call monitor as VDU, that is visual display unit. The image that you see on a monitor made up of tiny dots called pixels. जो आप इमेज देखते हो अपने मॉनिटर पे, वो किससे बनी होती है? छोटी छोटी टाइनी डॉट से बनी होती है. इसे हम क्या कहते हैं? पिक्सल्स कहते हैं. The colored images that you see on a monitor are due to colored pixels. जो आप colored images देखते हो अपने मॉनिटर पे, वो किसकी वजह से होता है? colored pixels की वजह से होता है. The most commonly used monitors are LCD, liquid crystal display, and LED, light emitting diode. ये आपके सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज होने वाले मॉनिटर्स हैं. नाउ लेट्स टॉक अबाउट प्रिंटर. प्रिंटर इज एन आउटपुट डिवाइस. एक आउटपुट डिवाइस है जो किस लिए यूज होता है? प्रिंट करने के लिए आउटपुट को आपके पेपर पे. द प्रिंटेड कॉपी दैट यू गेट फ्रॉम द प्रिंटर इज कॉल्ड हार्ड कॉपी. जो प्रिंटेड कॉपी आपको अपने प्रिंटर पे मिलती है उसे हम क्या कहते हैं? हार्ड कॉपी कहते हैं. नाउ लेट्स टॉक अबाउट प्लॉटर. प्लॉटर इज एन आउटपुट डिवाइस. ये आपका आउटपुट डिवाइस होता है जो किस लिए यूज होता है? प्रिंट करने के लिए यूज होता है गुड क्वालिटी ड्राइंग्स को, जैसे आपके डिजाइनिंग ऑफ कार्स हो, डिजाइंस ऑफ कार्स हो गए, ब्लूप्रिंट्स हो गए आपके बिल्डिंग्स के. इट इज यूज्ड इन डेस्कटॉप पब्लिशिंग ऑफिस. ये कहाँ पे यूज होता है? डेस्कटॉप पब्लिशिंग ऑफिस में यूज होता है. Now let's talk about speaker. Speaker are the output devices which are used to connect to the computer. ये वो output device है जो किस लिए यूज होते हैं? कनेक्ट करते हैं आपके कंप्यूटर को जनरेट करने के लिए साउंड. It is used to connect to computer to generate the. Now let's talk about processing devices. The CPU contains a processing unit. A CPU has a processing unit and a storage unit. It stores data, performs calculations, processes data and sends the result to the output device. ये क्या करता है? स्टोर करता है डेटा को, प्रोसेस करता है कैलकुलेशंस को एंड इन आउटपुट कहाँ सेंड करता है? आपके आउटपुट डिवाइसेस पे. CPU is called as the brain of the computer. We have read many times that CPU is known as the brain of the computer. It has three main components. कितने main components होते हैं इसमें? 3 main components होते हैं. That is CPU, means control unit. The control unit works like a traffic policeman and manages all the operations of a computer. ये कैसे वर्क करता है? ट्रैफिक पुलिसमैन की तरह वर्क करता है. सारी ट्रैफिक को मैनेज करता है, सारे फंक्शंस को, ऑपरेशंस को मैनेज करता है आपके कंप्यूटर के. नेक्स्ट इज अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, दैट इज ALU. दिस यूनिट performs various arithmetic operations like addition, subtraction, multiplication and division. It also performs logical operations. ये आपके logical operations को भी perform करता है like equals to, greater than, less than and not equals to. Next is memory unit, that is MU. This unit stores information in the form of instructions and data. जो unit होती है किस form में store करती है आपके data को? आपके डेटा को स्टोर करती है इंस्ट्रक्शंस एंड आपके इंफॉर्मेशन को स्टोर करती है आपके इंस्ट्रक्शंस और डेटा की फॉर्म में. नाउ व्हाट आर द स्टोरेज डिवाइसेस? द डिवाइसेस दैट स्टोर आर इंफॉर्मेशन एंड डेटा आर नोन एज स्टोरेज डिवाइसेस. स्टोरेज डिवाइसेस आर यूज्ड टू स्टोर इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ डेटा. ये स्टोर करते हैं इंफॉर्मेशन किसकी फॉर्म में? डेटा की फॉर्म में. दीज डिवाइसेस आर आल्सो कॉल्ड मेमोरी. इन डिवाइसेस को मेमोरी भी कहते हैं. नाउ व्हाट इज बिट एंड बाइट? A computer can understand only 2 states. कंप्यूटर 2 स्टेट समझता है आपके, जो रिप्रेजेंट होता है आपके 1 से, ऑफ रिप्रेजेंट होता है आपके
0 से. These 2 digits 0 and 1 क्या है are binary digits. जो 0 and 1 digits हैं आपकी binary digits होती हैं and they are also known as bits. The data is stored in the computer memory. जो data होता है किस में stored होता है? आपकी computer memory में stored होता है. किस form में? Bits की form में. और कैसे measure होता है? Bytes में measure होता है. 8 bytes from 1 byte. ये जो 8 bits होती है क्या form करती है? 1 byte form करती है. जिसका मतलब क्या होता है? 1 byte is equals to 8 bits. Now here are the types of memory. There are 2 types of memory. 2 type की memory होती है आपके कंप्यूटर में, internal memory and external memory. Now what is internal memory? Internal memory is also called primary memory of a computer. It is known as the primary memory of a computer. A computer assesses this memory first. जो computer होता है assess करता है इस memory को पहले. The data stored in memory gets erased when the computer is turned off. जो डेटा स्टोर होता है इस मेमोरी में वो सब इरेज होता है जब आप अपने कंप्यूटर को ऑफ कर देते हो. इंटरनल मेमोरीज ऑफ 2 टाइप्स, रैम एंड रोम. 2 तरह की होती है इंटरनल मेमोरी, रैम और रोम. नाउ व्हाट इज एक्सटर्नल मेमोरी? एक्सटर्नल मेमोरी इज आल्सो कॉल्ड सेकेंडरी मेमोरी. हम सेकेंडरी मेमोरी भी कहते हैं. दिस मेमोरी इज यूज्ड टू स्टोर द इन्फॉर्मेशन फॉर अ लॉन्ग टाइम. ये मेमोरी किस लिए यूज होती है? स्टोर करने के लिए इन्फॉर्मेशन लॉन्ग टाइम के लिए. The data and information are not lost even when the computer is turned off. जो आपका डेटा होता है और इन्फॉर्मेशन होती है वो लॉस नहीं होती जब आपका कंप्यूटर ऑफ भी हो जाता है. एक्सटर्नल मेमोरी इज वेरी इंपॉर्टेंट. वो बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज द इंटरनल मेमोरी इज वेरी लिमिटेड. जो इंटरनल मेमोरी होती है वो लिमिटेड होती है. इट इज ऑल्सो नोन एज बैकअप मेमोरी. से बैकअप मेमोरी भी कहते हैं, ऑक्सिलरी मेमोरी भी कहते हैं. नाउ व्हाट इज एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइसेस? A computer uses many external storage devices. एक कंप्यूटर जो होता है बहुत सारे external storage devices को किस लिए यूज करता है? स्टोर करने के लिए इन्फॉर्मेशन सच एज जो आपके हार्ड डिस्क में स्टोर करता है, CD DVD में, पेन ड्राइव में स्टोर करता है. दी स्टोरेज डिवाइसेस हैव डिफरेंट स्टोरेज कैपेसिटीज. जो ये हमारी डिफरेंट स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं इनकी डिफरेंट स्टोरेज कैपेसिटीज होती है. हार्ड डिस्क की सबसे ज्यादा स्टोरेज कैपेसिटी होती है. नाउ हार्ड डिस्क इट इज द मेन स्टोरेज मीडियम ऑफ अ कंप्यूटर. ये मेन स्टोरेज मीडियम होता है आपके कंप्यूटर का. ये कहाँ पे फिक्स होता है? आपके CPU बॉक्स में फिक्स्ड होता है. द हार्ड डिस्क कैन स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड डेटा. जो हार्ड डिस्क होता है लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन और डेटा को स्टोर करता है. नेक्स्ट इज CD. CD स्टैंड्स फॉर कॉम्पैक्ट डिस्क. CD का क्या मतलब होता है? कॉम्पैक्ट डिस्क होता है. ये क्या होता है? एक ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस होता है. इट इज एन ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस. कैसे थी? सर्कुलर होती है शेप में, रिफ्लेक्टिव मेटल कोटिंग होती है इस पे. इट कैन स्टोर अप टू 700 MB ऑफ डेटा. कितनी में स्टोर कर सकता है डेटा? 700 MB ऑफ डेटा इसमें स्टोर हो सकता है. इट कैन स्टोर साउंड्स, इमेजेस, वीडियोस, टेक्स्ट ग्राफिक्स एक्सेट्रा. ये टेक्स्ट ग्राफिक्स, साउंड, वीडियोस कुछ भी स्टोर कर सकता है. फर्स्ट CD वाज डेवलप्ड इन 1982. जो फर्स्ट CD थी कब डेवलप हुई थी? आपकी 1982 में डेवलप हुई थी. नाउ लेट्स टॉक अबाउट DVD. दैट इज डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क. DVD stands for Digital Versatile Disc or Digital Video Disc. It is an optical device which is used for storing data, recording movies. जो किस लिए यूज होता है? स्टोर करने के लिए, डेटा को रिकॉर्ड करने के लिए मूवीज को हाई वीडियो में एंड साउंड हाई वीडियो एंड अच्छे हाई साउंड क्वालिटी में. नाउ DVD is similar to CD. कैसी होती है? सेम होती है CD की तरह बट इट कैन स्टोर मोर अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन देन अ CD. ये ज्यादा अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन को स्टोर कर लेता है CD में. द स्टोरेज कैपेसिटी वेरीज फ्रॉम 4.1 GB टू 17 GB. जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है इसकी कितनी होती है? 4.1 GB से 17 GB तक होती है. नाउ ब्लू-रे डिस्क. ब्लू-रे डिस्क इज एन ऑप्टिकल डिस्क फॉर्मेट. ये आपकी ऑप्टिकल डिस्क फॉर्मेट होता है जो स्टोर करता है अप टू 128 GB ऑफ डेटा. दिस डिस्क इज मेनली यूज फॉर स्टोरिंग हाई क्वालिटी साउंड. ये डिस्क मेनली किस लिए यूज होती है? हाई क्वालिटी साउंड को स्टोर करने के लिए, गेम्स को एंड मूवी डेटा को स्टोर करने के लिए. नाउ लेट्स टॉक अबाउट पेन ड्राइव. पेन ड्राइव इज कॉल्ड फ्लैश ड्राइव. हम पेन ड्राइव को फ्लैश ड्राइव भी कहते हैं. इट इज द मोस्ट पॉपुलर डेटा बैकअप डिवाइस. इट इज यूज फॉर कॉपिंग एंड ट्रांसफरिंग डेटा फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर. ये किस लिए यूज होते हैं? कॉपी करने के लिए, ट्रांसफर करने के लिए डेटा को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में. So that's all for this lesson. I hope you all like the explanation of this lesson. Thank you and have a fantastic day.